Hello friends, very good morning to everybody. I'm Namita, your friend, welcoming you to my channel. So friends, today we'll start the first class of 4th semester. So today we'll start paper 14. Okay, today we'll start paper 14. Paper 14 is about contemporary India and education. So dear friends, yesterday I gave all the important questions of paper 14. Okay, so today we'll start the questions one by one we will do today. Okay, so first unit of paper 14 is about normative vision of Indian education, Indian constitution. Today we'll study about Indian constitution, संविधान, भारत का संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो थोड़ा इंट्रो क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसमें हम देखेंगे. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान क्या है, संविधान में क्या क्या है. व्हाट आर दीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, who wrote the constitution. Okay, see, constitution. What do you mean by constitution? A constitution is a written document. Constitution is a written document that contains a set of rules for government. See, constitution is a written document. It is a written document that creates government. It forms government and describe how the government will work and how the government will run. Okay, it lists the power of the government. What are the powers a government, what the powers a government has, and what are the responsibilities of a government, it will decide. Okay, now it defines the fundamental political principle and establishing the structure, procedure, power, duty of government. See, it will decide the powers of a government, what are the duties of a government. Okay, state government का duties क्या है and central government का duties क्या है, local self government का duties क्या है. Okay, what is the duty of a IAS officer, what is the duty of a IPS officer, what are the duty of our judge of Supreme Court or High Court. Okay, so fundamental, political, and what are the principles. It will decide the structure. Okay, now structure and procedure. See, for every government, election is there, so procedure of election is different. Okay, if I want to be IAS officer, for this there is a process, right? एग्जाम्स है. अभी कोई हाई कोर्ट में जज बनना चाहते हैं, फॉर दैट देयर इज अ प्रोसेस. ओके, नाउ बाय लिमिट द गवर्नमेंट्स ओन रीच. सी, we the people elect our government, right? सो गवर्नमेंट के पास सब कुछ पावर नहीं होता है. they have some limits. They can't do what they want. Whatever गवर्नमेंट को जो चाहिए वो नहीं कर सकता है. Okay, they have some limits. It guarantees certain rights through the people. Constitution guarantees certain rights to the, it gives certain rights to the people. Okay, हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स. The Constitution of India is the world's lengthiest written constitution. हमारा constitution वर्ल्ड का सबसे lengthiest constitution में. इसमें in this 448 articles in 25 parts. ये जो 448 articles है उसको 25 parts में डिवाइड किया गया है. Okay, and 12 schedules and has 105 amendments. See, in our constitution 448 articles in 25 parts and 12 schedules.
schedules before. अब now इतना है, पहले कितना था? 395 articles in 22 parts and 8 schedules. Okay. 105 amendment. Amendment means what? Change or addition of some articles. Okay. पहले कुछ आर्टिकल्स था, हम उसमें कुछ चेंज लाए, ओके, और कुछ ऐड किया, उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स. ओके. नाउ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर is known as father of Indian Constitution. Okay. Indian Constitution was drafted by a committee. Indian Constitution is drafted by a committee, and the head of the committee is what? B.R. Ambedkar. Who? B.R. Ambedkar. For this, Dr. B.R. Ambedkar is known as father of Indian Constitution. Okay. Now, it took 2 years, 11 months and 18 days for completion. 2 years, 11 months, 18 days. Please remember, for making the Indian Constitution, it took 2 years, 11 months and 18 days. See, it drawn from various sources. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स है, कुछ पार्ट्स है, these are drawn from various sources. Okay. Federal system with unitary bias, 3-tier government structure like central government, state government, local government, division of powers between the state government, central government, local government, independent judiciary. Our judiciary is independent, no link between the states. Okay. So this is all about what? Indian Constitution. Okay. Indian Constitution. This is the written document, lengthiest. It limits the power of the government. Okay. It took 2 years, 11 months, 18 days. Now we will do the first question of this chapter. What is the first question of the chapter? See what my baby done. So now we'll do the first question of this chapter. Write a short note on fundamental rights. Maulik Adhikar. Okay. What are the fundamental rights? We will study now. The fundamental rights are enriched in part 3 of the Indian Constitution. So, my dear friends, before only I said we have 12 parts. Indian Constitution has 12 parts. In 12 parts, fundamental rights in part 3. Fundamental right part 3 में है. Okay. From article 12 to 35. Before I said we have 448 articles. From this, fundamental right contains 12 to 35. Friends, fundamental rights. This fundamental right adopted from USA. Fundamental right adopted from USA. Okay. So fundamental right को Magna Carta भी बोल सकते हैं. Magna Carta of the Constitution. So, originally the Constitution provided for 7 fundamental rights. Before, we have 7 fundamental rights, but एक कट कर दिया है. See, 1. Right to, what are the fundamental rights? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to property, right to constitutional remedies. पहले 7 फंडामेंटल राइट्स था, बट राइट टू प्रॉपर्टी को कट कर दिया.
Now we have 6 fundamental rights. Okay. However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by 44th Amendment Act 1978. See, we deleted the right to property. Right to property we deleted. How? By 44th Constitutional Amendment Act 1978. Now we have 6 fundamental rights. What are these? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Okay. The fundamental rights were included in the Constitution because they were considered essential to the development of personality and to pressure from human to presence for human dignity. See, why the fundamental rights are important? The fundamental rights are important because they are needed for the development of the individual and the human dignity. At present, there are only 6 fundamental rights. All people, irrespective of race, religion, caste, or sex, have been given by the right to move the Supreme Court and write courts for the enforcement of fundamental rights. Okay? आपके fundamental rights में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, you can go to Supreme Court. Okay? Now, right to equality. Right to equality, the first article. Right to equality, article consists 14 to 8. This is the first fundamental right. Right to equality. What is right to equality? See, article 14. Equality before law. Law के सामने, in front of the law, everybody is equal. Okay? वो एक आईएएस ऑफिसर हो या एक मिनिस्टर का बेटा हो, एक आईएएस ऑफिसर हो या एक पुअर पीपल हो, इन फ्रंट ऑफ द लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल. आर्टिकल 14. What is Article 14? Provision of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Provision of discrimination. So, अभी देखो, एवरीबडी इज इक्वल. अभी देखो, हिंदू के लिए डिफरेंट और हिंदू के लिए डिफरेंट, मुसलमान के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, और कोई वाइट पीपल है उसके लिए डिफरेंट लॉ है, या कोई ब्लैक है उसके लिए डिफरेंट लॉ है. ऐसा नहीं है. नो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, केस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपको फील हो रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, वो वाइट है उसके लिए उसको कुछ बेटर मिल रहा है, और मैं ब्लैक हूँ इसलिए मुझे क्लास में लास्ट बेंच में बैठा रहे, तो यू कैन कंप्लेन, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके. और सेक्स, वो बॉय हो और गर्ल हो, सबके लिए समान. Article 16. Equality of opportunity in matters of public employment. Okay? जो जॉब्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है सबको समान है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बाकी ये जो गवर्नमेंट है जो कि जनरल के लिए और SC/ST के लिए रिजर्वेशन रखी है, वो अलग है. ओके. आर्टिकल 17. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. पहले क्या था? अनटचेबिलिटी था, उसको एबोलिश किया गया है. ओके. आर्टिकल 18. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. एबोलिशन ऑफ
टाइटल जो जमींदार थे ना, उनका जो कुछ टाइटल्स था, उनका बेटा के लिए भी जो टाइटल्स रखा गए थे वो सब एबोलिश किया गया है. सो right to equality, the first fundamental right from 14 to 18. The second one is what? Second one is right to freedom from article 19 to 22. What is right to freedom? क्या है freedom? Protection of certain rights regarding freedom of speech. Freedom of speech. Now Article 20. Article 20 is about protection in respect of conviction for offense. So, for example, friends, there is a man called Raghu. Okay, Raghu did a crime in 2020. कुछ भी एक क्राइम किया इन 2020, उसके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं था. बट इन 2021 गवर्नमेंट क्या एक रूल लाया फॉर दिस ऑफेंस, एक पनिशमेंट लाया. तो वो 2020 में किया था, तो 2021 में एक रूल आया, तो उसके लिए उस रघु को अभी हम पनिशमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब क्राइम किया था तभी इन द टाइम government don't have any rule or any punishment for that crime. Okay, see for example, कोई लड़का जो अभी रेप कर देते हैं, पहले so many laws उसके लिए लॉस डिफरेंट थे, अभी लॉस डिफरेंट है. पनिशमेंट पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है. सो फॉर दैट रीजन वो जो पहले किया था, तो अभी जो रूल आया उसके लिए अभी उसको हम पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं. राइट. आर्टिकल 21. व्हाट इज आर्टिकल 21? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आप जो चाहे वो कर सकते हो. ओके, आपको मन है आप घूम सकते हो, आप घूमने जा सकते हो. पर्सनल लिबर्टी, यू कैन स्पीच, यू कैन डांस, यू कैन टॉक. आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन. ये सबके पास है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन. आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केसेस. In certain cases you can be protected. Article 23, provision of traffic in human beings and forced labor. Okay, provision of forced labor. Article 24, provision of employment of children. Employment of children in factory. These are, you can understand, right? Article 25, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. आप अभी हिंदू हो, आपको क्रिश्चियन होना है, you can be join in that religion, right? आप religion change कर सकते हो. Article 26, freedom to manage religious affairs. You have freedom. This is what article 25, freedom of conscience and free profession. Okay, क्या करते हैं आजकल, जो अभी हिंदूस के हैं, हिंदू वाले हिंदू के प्रचार करते हैं, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन धर्मों का, रिलीजन का वो प्रचार करते हैं. दे कैन डू दैट. एंड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप चेंज भी कर सकते हो. Okay, you have the freedom for that. Article 27, freedom to payment of taxes for promotion of any particular religion. आपके religion की growth के लिए आप कुछ payment taxes वो भी कर सकते हो. Okay. Now Article 28, freedom as to attendance at religious institutions, religious worship in certain educational
institution, freedom as to attendance at religious institutions. Ritul, हाँ आश्ची बेटा, religious worship in certain educational institutions. हाँ आश्ची, Article 29C, protection of interest of minorities, protection of interest of minorities. Article 30, right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 32, remedy for enforcement of rights conferred by this part. Friends, this is all about what fundamental rights. There are six fundamental rights. Okay. So अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया है आफ्टर 2 years, सो आई एम गेटिंग लिटिल नर्वस. मेरा हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें प्रोनाउंस या ग्रामर में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सो फॉरगिव मी फॉर दैट. ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. सी मेरा बेटा उठ गया है. ओके, बाय बाय.